Hello everyone, in this video I will show you how the Redmi Note 11 Pro performs in playing the PUBG mobile game. Yes, as we know this phone is driven by the Dimensity 920 processor. Meanwhile, RAM is available in two options, namely 6GB and 8GB. Internal memory is also available in two versions, 128GB and 256GB, combined with Android OS 11, which is sweetened by Xiaomi's user interface, MIUI 12. Redmi Note 11 Pro has a 5160 mAh battery with 67-watt fast charging technology. Can fully charge the battery in just 35 minutes. And now we will see how the Redmi Note 11 Pro performs in playing PUBG mobile games. I also embed the performance log feature to be able to find out FPS temperature, remaining RAM, and other information. In the first session, we will test with TDM Gameplay mode, then we will play with Classic mode. Take frequent breaks and play responsibly. Team match, let's go! First point for the red team! Watch out! Reloading! Watch out! Watch out! The blue team is in the lead!
team! Great! You're about to win! The blue team is about to win! Half of the match is over, and the red team is in the lead. Blue team victory! This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. तो जैसा कि गाइज आप लोगों ने यहाँ पर देखा, परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट है, कोई भी लैगिंग हीटिंग इशू वगैरह हमें देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर हमें कॉन्सिस्टेंटली जो है 50 to 56 FPS देखने को मिला, मतलब 60 FPS हमें आराम से इस गेम के अंदर मिल जाएगा। गेम में कोई भी लैगिंग इशू, हीटिंग इशू या फिर और भी कोई फ्रेम ड्रॉपिंग वगैरह हमें देखने को नहीं मिली है। तो अगर आप लोग इस फ़ोन को स्पेशली PUBG या BGMI के लिए लेना चाहते हैं तो बिल्कुल से ले सकते हैं। बस इस फ़ोन के लॉन्च होने की डेट जो है अभी बाकी है, वो क्लियर नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन जब इंडिया में लॉन्च होगा तो Redmi Note 11i के नाम से लॉन्च होगा। तो फ़ोन ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको ये टेस्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। तो जैसा कि गाइज आप लोगों ने यहाँ पर देखा, परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट है, कोई भी लैगिंग हीटिंग इशू वगैरह हमें देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर हमें कॉन्सिस्टेंटली जो है 50 to 56 FPS देखने को मिला, मतलब 60 FPS हमें आराम से इस गेम के अंदर मिल जाएगा। गेम में कोई भी लैगिंग इशू, हीटिंग इशू या फिर और भी कोई फ्रेम ड्रॉपिंग वगैरह हमें देखने को नहीं मिली है। तो अगर आप लोग इस फ़ोन को स्पेशली PUBG या BGMI के लिए लेना चाहते हैं तो बिल्कुल से ले सकते हैं। बस इस फ़ोन के लॉन्च होने की डेट जो है अभी बाकी है, वो क्लियर नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन जब इंडिया में लॉन्च होगा तो Redmi Note 11i के नाम से लॉन्च होगा। तो फ़ोन ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको ये टेस्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।